Hello everyone, it's me Sidra from Yellow Light and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to review Zay Beauty's new launch, which is their Pyar Yaar collection of eye pencils. So I got this box in a PR package and I have swatched these on my hands but I haven't tried it on myself. अभी मैं इनको review करूँगी and we will see if these are worth it or not. Let's open it. This is what's inside. So for this Pyar Yaar collection, Zay Beauty has collaborated with Shahzeen. Everybody knows her. So in the box, there comes this cute little bracelet and 5 of their eye pencils. Let's talk about their packaging. The outer packaging looks super cute. Their hand gestures showing love, hearts and everything. There is this Pyar Yaar written over here and Zay Beauty x Shahzeen. Let me show you all of the shades. So first we have is this blue shade which is called navy. So this one is gold, this is a jet black color. Then we have this bronze shade and I think there is some sort of shimmer in it. Then we have this jade, it's a deep green color. And lastly we have is this mocha, which is very popular on Instagram आजकल. So I think I'm going to try all of these. I don't know how I'm going to do this, but let's jump into this. इनके मैं आपको key features पढ़ के बताती हूँ. So these are long-lasting smudge-proof gel eye pencils, easy glide formula, transfer-proof, comfortable in waterline, ultra-pigmented. So this one eye pencil retails for 1750 rupees, which is 25 AED and 7 USD. I think that's a reasonable amount. Still, we will see if these are worth it or not. I'm still not sure what look I'm going for, but let's see. क्योंकि आज मैंने blue पहना हुआ है, I really feel like using this navy shade. So this is the pencil and you can sharpen it. You get a lot of product here. So I have some concealer on my lids जिसको मैंने set कर लिया था. इसके साथ मैं एक line draw करूँगी अपनी lash line के पास एक wing eyeliner की तरह इसको बनाऊँगी. Ooh, इतने अच्छे से ये अप्लाई हो रही है and I love the color. This is like a very deep blue. इसके साथ मैं थोड़ा सा एक लाइनर टाइप ड्रॉ करूँगी. मैं इसको जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं इसको अपनी लैश लाइन के करीब लगाने की कोशिश कर रही हूँ. और एक छोटा सा विंग मैंने बनाया है, थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में बड़ा कर देते हैं. It is looking beautiful and I love the color. Let's try smudging it. मैं इसको smudge करके देखती हूँ थोड़ा सा. It is getting dry. ये smudge हो तो रहा है लेकिन it dries down very quickly. तो आप इसको जैसे ही लगाएं, अगर if you want a smudged eyeliner type of look तो आप इसको फ़ौरन smudge कर लेंगे क्योंकि उसके बाद ये हो जाता है smudge proof. ये अपनी जगह पे जब set हो जाता है उसके बाद it won't move. Yes, there is no transfer. So this is how it looks like. This is just the color navy. मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं यहीं पे इसको रोक दूँ. At least मैं कोई 2-3 तो use करूँगी just for the sake of trying. So next I think I will go with this shade called bronze. It looks like a very pretty color. This is what it looks like. Yes, it has some shimmer in it. बहुत ही subtle सी, बहुत ही soft सी. I am using this on top of this eyeliner, very close to this. Ooh, this is a really pretty color. Yes, it is looking beautiful, 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 beautiful. And on top of it, I will use this color mocha. These are very creamy, very very creamy. और मैं इसको जल्दी से smudge करने की कोशिश करूँगी ताकि एक transition सा बन जाए. Trying my best to smudge it. Yes. Wow. It is looking beautiful. It is looking so pretty. So I've used these 3 shades and it is already giving. So what I want to do is take that same navy shade and make I want to make a line in the inner corner ताकि वो एक cat eye type feel है. अभी ये sharp नहीं हुई but let's see if I can achieve that. I am scared. Oh, it is looking nice. I am proud of myself. Look at that sharpness. So I think I did a great job with the inner corner, but this is looking so good. And these are just the eye pencils. अभी मैंने कुछ और eyeshadow वगैरह use नहीं किया. Transition is very pretty. I've used here the 3 shades. Now I would like to go with the kohl in the waterline. If this works, this is going to be my favorite because who doesn't like a black smudge-proof eyeliner? Let's go. टुडे आई एम वेयरिंग लेंसेज जो कि मुझे बहुत इरिटेट करते हैं. मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, यू मस्ट नो दैट आई रेयरली वेयर लेंसेज. सो लेट्स गो. अच्छा, मैं ये नोटिस कर रही हूँ जिस तरह से ये ऊपर या स्किन पे आपकी लगता है, ये वाटर लाइन में उस तरह से पिगमेंटेड नहीं है बिकॉज आई हैव यूज्ड मोर पिगमेंटेड वाटर लाइन पेंसिल्स देन दिस. बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड. आई एम लविंग हाउ इट अप्लाइज. ये बिल्कुल आराम से लग जाती है और अगर आप इसको 1-2 बार अप्लाई करेंगे तो पिगमेंट भी आपका आ जाएगा.
I am really impressed by the formula. So what I'm going to do is taking that navy blue shade and using right under the lower lash line. पूरा एंड तक मैं इसको नहीं लेके जा रही, सिर्फ यहाँ ऊपर वाले को मैं फिर से थोड़ा सा डार्क करूँगी. अब मैं इसको जल्दी से नीचे वाले को स्मज करूँगी ताकि एक सीमलेस सी लुक आए. So my eye makeup is done. Let me put on some mascara. So this is the finished look and I absolutely love these. अब हम देखते हैं इनके जो की फीचर्स थे वो सही थे कि नहीं. It is long lasting smudge proof gel eye pencil. Long lasting का भी मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए वेयर नहीं किया. But these are smudge proof and I think these are going to be लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि इनका फार्मूला बहुत अच्छा है. मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग भी होंगी. सो ईजी ग्लाइड फार्मूला, दैट इज़ ट्रू. ट्रांसफ़र प्रूफ, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती. कंफर्टेबल इन वाटर लाइन, ये भी ठीक है. अल्ट्रा पिगमेंटेड, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. दीज आर वेरी पिगमेंटेड. आई थिंक दीज आर वर्थ द मनी और ये आपको एफर्टलेस और बहुत क्विक लुक्स दे सकती हैं. ये आई लुक लिटरली 3 से कंप्लीट हो गई थी. इवन आप एक भी यूज़ कर लें तो तब भी ऐसे लगता है कि आपने कोई आई लुक क्रिएट की हुई है. So what do you guys think about this look? I hope you guys enjoyed this video and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. See you in the next one.